Hello, Namaskar. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. You are most welcome in this I Am Buddha Foundation initiative where we conduct this question of life every Sunday, 10 o'clock, with my friend from Atlanta, Desh Kapoor. Welcome, Desh. So, Desh, this ego thing, before that, let me just set the room and let me tell people that we started it just like that. We said there are so many questions which people have stopped discussing now, and we are debating only politics or bitcoins or superficial things, and very few people now are spending time. Yes, you can say there's Sadhguru and there are other gurus and there are philosophers in all societies, but for the consumption of general public, where people talk like general people, where people try to explain complex ideas into simple language. I always emphasize Desh a lot on simplicity, because simplicity is the most difficult thing, complexity is the easy thing. If right now I want to make it complex, I can make it complex in no time. It takes me 10 seconds to become Shashi Tharoor, you know. But uh, but to I think the great communication lies in picking up the great things, complex ideas, and bring them in a very common language to common people. And that's how this idea in my mind started. I said, let's pick up complex metaphysical questions and not try to answer them, but discuss them, open a debate around them, bring new perspectives, new theories, new anecdotes, new trivias, whatever material you get, bring it. And second thing was, normally people in these kind of subjects try to sound very extremely पंडित बन जाते हैं ना सब लोग, and people try to be philosophical, and people try to make things very very ambiguous, so that others can't figure out what they're saying. My idea was to take these ideas to people. These are very approachable ideas. Desh. So that's why we decided we'll do this. So we are not here to give answers to anything. We are here only to discuss amongst each other, so that it triggers your mind also and you find your own answers to all these questions. Today in the morning, Desh, on Clubhouse, I was doing a room on Bhakti, what is Bhakti, and we were discussing. And we realized that people do not even understand that there is no real translation of Anand in English. There is no translation of Guru in English. The only translation of Guru in English is Guru. But that also is being used like anything: advertising guru, literature guru, somebody who's become famous and who's an expert. They mean expert by guru over there, not somebody who holds your hand and shows you the light. That it doesn't mean that. Vayu, for example, Vayu does not mean wind or air. In fact, Vayu means both and also means prana. So it has three different branches. So all these things have become very superficial. Nobody talks, and therefore I thought that's very important that we discuss this. So today we are discussing ego, though the titles are in English, so we have to call it ego. But before that, I just want to clarify something, that when I start talking about ego, Desh, and this is a disclaimer for you also, since we had no pre-meeting on this issue, and just for people to understand, Desh and I never ever discuss what we are going to say, because we just talk spontaneous. We decided that we'll just speak our mind like we sit in a drawing room and discuss. Unless you want us to make it very formal, then write to me, we'll think about it. So all these, so I figured out in the morning while talking, and I told people that while the concepts of gravity, giving it a mathematical equation, or the concepts of friction, or various scientific, the chemical charts of organic and inorganic matter stable, all these scientific things, definitely steam engine and cycle and blah blah blah, were invented in the West, in whichever country, but primarily in the West. If that is true, if they determine the law of nature or law of physics, then the law of life also are determined by lots of things. Why everybody is seeking happiness? Give him a nice aircraft, give him a big bungalow, give him all the technology and say, be happy. Why money and other things can't get you rid of sorrow? What is pain?
why ego is the biggest hurdle in bringing peace and harmony in this world. Why for millions of years we are conflicting. Why India was the only country in the history of humanity which never ever attacked anyone and did let its invaders and attackers come and become the kings. India is the only country in the history of the world where minority ruled us for 1000 2000 years. Minority. There's no example in the world. And that's where my thing about ego comes. And I believe that ego is the most misunderstood concept in the world, though everybody is a pundit and loves to speak on ego. You sit with your wife, you fight, she'll say it's not you, your ego is talking. Your boss would want to crush your ego. You hate your boss for his ego. You don't like your political leaders for their ego. They don't like their colleagues for their ego. The entire conflict and problem is in the world is ego. You meet somebody, you like each other, you become good friends and everybody. Suddenly you grow or you acquire power and then your ego comes, see, मैं तो इतना बड़ा आदमी हुआ, he is not acknowledging me. बचपन की दोस्तियाँ क्यों टूटती हैं? इसलिए तो टूट जाती हैं. You are not willing to accept each other the way you are. One is bigger than ego at every level. So everybody very loosely talks about ego. But in India, we understood it. And we never said that ego is a bad thing. We just divided it into two parts. The helpful part, which will help your life, and the other is the destructive part. So ego has two sides, like North Pole and South Pole. When you use one, it can really do wonders for you. It can take you anywhere in the world. People attain great heights when you use one part of ego and when you discard other. And I'll tell you, and you have correct words only in Sanskrit and Hindi for that, in no other language. If it is there, I may be wrong, please enlighten me. तो जिसको हम कहते हैं, एक है अभिमान और एक है स्वाभिमान. ये दो हमने डिवाइड किया है. लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट विल बी ईगो एंड प्राइड. स्वाभिमान is your pride, whereas abhiman is your ego. As long as it is swa, your abhiman is swa, means for yourself, which is very important to survive in this world, which is very important. It will do good to you and to the world. The minute it's a very razor edge, it's a very thin line division, but that swabhiman can become abhiman any moment. Right. For example, when Gandhi kept all those Amaran Anshan, matlab, I will fast till I die. Not even once he died because of Anshan. He kept some 40-50 different Amaran Anshans. Right. Correct? And it's not that I really love Gandhi's teachings, but some of his practices I never understood. It's not that I'm a great fan of Ambedkar, but there are some good things Ambedkar has said. In fact, just to give you an example, when Ambedkar, do you know Ambedkar demanded a separate country for Harijans? Right. And if you look at it technically and logically, there was nothing wrong because the Muslims are demanded and it was allowed. So he said, why not for Harijan? If you're dividing the country, I know in this country Harijans will never be treated equal to upper caste. Gandhi sat on Amaran Anshan. He refused that. He didn't sit on Amaran Anshan for Jinnah's demand, but he sat for Ambedkar's demand. Then after a long time, he never died. This is a truth that he did not die because of Amaran Anshan. Then ultimately, Ambedkar gave in. Ambedkar went and gave him juice and all those kind of things. And he had it and he said, okay, we are brothers now, no problems. And it was over. Now let's judge who was doing what. It was Gandhi's Abhiman that I have coined the word Harijan. I have written a newspaper called Harijan. I have done this, I have done that for how can
Harijans go away from me, that will be that will be loss of my personal image and of my integrity. I cannot let it happen. Therefore, I go into this tantrum of sitting on this fast until death. Correct. That was a tantrum. Millions of rupees were spent on saving him at that time. Your friend Rajneesh always used to talk about how much money was spent on poor Gandhi. Right. And later on, Ambedkar said this. People asked Ambedkar, you demanded this. Why did you succumb? Why did you surrender to him? He said, if Gandhi had actually died, or even if he had fallen sick and people had to take him to the hospital, people would have killed Harijans. They would have beaten up Harijans. And that's why my pride for Harijan rights asked me to surrender to Gandhi's request. Now it's a very deep understanding. So this is the difference between Swabhiman and Abhiman. Now I've just put the perspective. So today let's discuss on these lines. So the point I was trying to make is that today all Guru and Sadhana, Anand, Shraddha, Abhiman, Swabhiman, because we translate them into English, they are all distorted, people don't understand. So let me start asking you this question. What do you think, what is ego, and is it different from pride? Can ego be good? Can ego be useful to society? Were aeroplanes created, or were things invented because it was somebody's ego, or it was somebody's pride? Let's explore this. Okay. I think this is important to understand कि हमारा जो discussion है, that is never a debate. That is always a discussion which हम like अपना thought process रखते हैं, and that can trigger somebody else's thought process also. तो एक वो साधु थे और या साधक थे, वो he went to a very famous guru and he knocked the door. मुझे याद नहीं कि कौन थे वो. Knocked the door and that like very big guru or like from inside old man, he asked कौन है. तो उन्होंने कहा वही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ. तो फिर उन्होंने अंदर आने दिया और आगे उनकी दीक्षा चली. पर आई थिंक ये जानना कि मैं कौन हूँ, आई थिंक ये अहम जो है या मैं जो है, लाइक दैट सम पीपल इक्वेट टू ईगो ऑल्सो. ये मेरा अहम है, ये मैं हूँ, और लाइक इसकी वजह से आगे बाकी सारे इम्पैक्ट्स आते हैं. तो द वे आई ऑलवेज हैव टेकन ईगो इज दैट इट इज द आइडेंटिटी दैट वी चूज. एक तो जैसे वो पूछ रहे थे कि कौन है, यही मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ. जैसे रमन्ना महर्षि हमेशा पूछते थे, कोई अगर पूछता था कि ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ, वो पूछते कि ये कौन पूछ रहा है, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. So if you can identify who's that person who's asking this, means which identity of yours is really asking this question. And if it is an identity of it is you, as in the core you who's asking this question. Because if it is core you who's asking this question, then the question will be very different. Then it won't be attached to an identity. It will be like very existential question to this entire life. So like मेरे नज़र में जब मैं देखता हूँ कि हम जो आइडेंटिटीज ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक फिजिकल फॉर्म हूँ, मैं फिजिकल फॉर्म हूँ तो मेरी बाउंड्रीज होनी चाहिए. मेरी बाउंड्रीज हैं तो मैं हर जगह उन बाउंड्रीज को लांघने की कोशिश करूँगा. एंड देन like that translates into wars and territory and like people going for conquest. अभी मेरे को like इतना जीतना है, फिर वो एक इंसान अलेक्जेंडर बन जाता है, ऐसे आगे चलता रहता है. और वो नहीं होता तो एलन मस्क बन जाता है, वो मार्स पे जाना चाहता है. तो वो बाउंड्रीज एक्सटेंड करता रहता है, क्योंकि मैं एक फिजिकल बीइंग हूं. दैट इज हाउ आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ, नॉट एज अ कॉन्शियसनेस. देन आई एम ह्यूमन बीइंग. मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो मेरे को बाकियों को मारना है, खाने के लिए मारना है या ट्रॉफी हंटिंग के लिए मारना है. मैं आज लाइन को मार के आया हूं तो मैं इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग हो गया हूं क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं उनसे. तो ये एक ईगो है कि
कि simply because I have an identity, the other person has to be an enemy or adversary, and has to be a different person, like my like opposite. अगर वो मेरा एडवर्सरी है तो मेरे को उसको हराना ही होगा, तो मैं ऐसे रह नहीं सकता। तो ऐसे ही मैं फिजिकल हूँ, बीइंग हूँ, तो मेरे को वो लोगों से लड़ाई करनी है, मेरे को अपनी बाउंड्रीज बनानी है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को बाकियों को मारना है। और अगर मैं एक मैं अगर जैसे एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग था, आई यूज्ड टू लाइक आई हैड गॉन टू वेनेजुएला एंड फॉर वन ऑफ माई प्रोजेक्ट्स। मैं उसमें एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग एक फर्म में काम करता था। तो उसका पार्टनर जो था वो एक ही वाज वाइट गाय। वहाँ पर बड़े सारे यूरोपियंस हैं, ही वाज फ्रॉम यूरोपियन डिसेंट। वहाँ जर्मन्स भी रहते हैं, इटालियंस भी रहते हैं, और भी बड़े सारे लोग रहते हैं। तो ही वाज वन ऑफ दोज यूरोपियन डिसेंट का बंदा था, who used to live in Venezuela, and he had also worked in US for around 10 years, and then he left and went back to Venezuela. तो मैं से पूछ रहा था, मैं why did you come back to Venezuela when you were working so well in US? So he said कि मैं वहाँ था और मेरे को बाकी Americans जो हैं, they used to call me Hispanic. He said, I'm a white guy from descent who used to live in Venezuela, but I used to be called Hispanic. And he said कि देखो कि वो भी white, मैं भी white, पर फिर भी मेरे को कुछ और बोलते थे। उसकी आइडेंटिटी जो थी, दैट वाज रेस, एंड ही वाज नॉट गेटिंग इट, लाइक ही वाज नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर दैट रेस। सो ही गॉट वेरी दिस थिंग, उसने अपना पूरा करियर ही चेंज कर लिया, सिर्फ इसी वजह से कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली खुद की रेस की। और क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया था खुद को रेस के साथ। अगर वो खुद को एक प्रोफेशनल की तरह लेता तो कुछ और होता उसका शायद डिसीजन। तो हमारे जो डिसीजंस हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं अबाउट आवर आइडेंटिटीज, दैट डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड लाइक व्हाट हैपेंस इज कि इसी अटैचमेंट टू आइडेंटिटी से हमारी गिल्ट भी आती है कि मैं ये हूं फिर भी मैं ये नहीं कर रहा जो मेरे को करना चाहिए। इसी से हमारी इनसिक्योरिटीज भी आती हैं। इसी से लाइक वी गेट अल्योर्ड टू सर्टन थिंग्स। अब वो कई रिलीजन्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा एक पैन जैसे उम्मा है, दैट आइडेंटिटी, वो वहाँ इंडिया में बैठे हुए जो हैं जो मुस्लिम्स हैं, वो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ वो कर रहे हैं सॉलिडारिटी। उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी कर रहे हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी है। अब वो एल्योर है आइडेंटिटी का कि वो उनके साथ हो रहा है तो मेरे को भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, हालांकि कोई जुड़ाव है नहीं। तो ये एक तरह का वो है, दिस इज लाइक when you identify with something, with some concept or with anything, then all of the things like start coming in, and that is why your decisions, your actions get tainted. Now maybe the reason why we never as Indians, like we never like attacked other people or conquered other people, were because like this was one thing that was always instilled in us, that जो हम हैं that is bigger than just the identity of being from one place or one religion or whatever it is. That is why हमारे वो लोग अब वो काफ़ी बोलते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, बट लाइक इफ़ यू रियली लुक एट इट, मैं अक्सर हंसता हूँ कि लोग कहते हैं कि वो मनु के सिस्टम में ब्राह्मण्स वर द हेड ऑफ द होल थिंग, पर वही लोग जब खुद को अपने आप को एड्रेस करते हैं कहते हैं आई एम द हेड ऑफ माई एनजीओ, आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग। तो वो क्या है? मतलब लाइक ओबामा और बाइडन इज द हेड ऑफ द स्टेट, सो व्हाट डज दैट मीन? सो बेसिकली व्हेन दे लाइक हमारे जहाँ जो किंग थे उनके राजगुरु हुआ करते थे। जो राजगुरु होते थे वो एक बहुत बड़े योगी या गुरु होते थे who used to assist them in conducting properly. So this was instilled in those people in that way, I think. So that is why like we never went in that direction, although in some cases I do believe we should have. वो अगर हमने जाके टर्क्स को वहीं अगर झेला होता उन्हीं की लैंड में, तो वो यहाँ कभी ना आते। या एब्सोल्युटली। देखो क्या है कि हम लोगों को ये तो, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज एक्चुअली invented
और डिस्कवर्ड वॉट एवर जार्गन यू वांट टू यूज़, और जिसमें से उसको प्रोफेस ही नहीं किया, प्रैक्टिस भी किया नॉन वायलेंस जो हमारा है, नॉन अटैकिंग, वी आर नॉट एग्रेसिव। पर इसमें हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, वो भी एक तरह का ईगो है। देखिए, इतना ज़्यादा हमने घमंड किया इस बात पे कि हमने लोगों को ये नहीं बताया कि स्वाभिमान को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी फर्स्ट इटर्नल ड्यूटी है। इटर्नल ड्यूटी है ये, एक दो दिन की नहीं है। वाई आर यू हियर अदरवाइज? सो और देखिए, जैसे कि वायलेंस का क्या है कि अगर कोई आपके ऊपर वायलेंस करता है और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, या आप किसी पे वायलेंस करते हैं, बोथ आर वायलेंस, यू आर अलाउइंग वायलेंस इन बोथ द केसेस, Correct. इजंट इट? सो जैसे गांधी, मैं आई हैव एकेडमिक, आज गांधी पता नहीं क्यों दिमाग पे चढ़ गए, पर आई हैव अ वेरी 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 एकेडमिक क्वेश्चन टू आस्क। गांधी वॉज नॉन वायलेंट, he professed non-violence, but when it came to dividing the country, he stood witness to that violence. I think that was a very violent act. Right. मैं बहुत कुछ है बोलने नहीं, को। अभी वो वक्त नहीं है, पर it's not that I don't see, and these leaders, their egos. See, ego of a common person is very dangerous for the family, friends, people around him, and for himself. But the egos of authorities, be it father in a family or a mother in a family, or sometimes when parents become old, then the son starts showing his authority, or sometimes the son is handpicked, then the wife, daughter-in-law starts. Anybody can, throw around authority. Authority and ego, the combination is lethal. That's what I think. Right. ये हिंसा और ईगो का जो है ना रिलेशनशिप बहुत डीप है मेरे हिसाब से। वो कृष्णमूर्ति अक्सर बोलते थे कि द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग, Yeah. right? And that is very very like right, and that is very important to understand, because जैसे कृष्ण जो थे, उन्होंने जब गीता में बोला, उन्होंने बहुत अहिंसा के बारे में बात की, पर उन्होंने फिर भी उसको जाके लड़ने की बात की। तो क्या अहिंसा सिर्फ लड़ना है, या अहिंसा is being and like who you really are, and like hinsa is the fight between being and becoming, because then it has a direct relationship with ego, because ego अगर मैं है, अगर अहम है, then अहम में और जो मैं खुद हूं अंदर कोर मैं, उसके बीच की लड़ाई है, right? And like, that is why Gandhi was wrong in many ways about how he described hinsa or ahinsa, because like not many people know, but वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो उन्होंने शुरू की थी, वो उन्होंने उनमें और बाल गंगाधर तिलक के बीच में वो काफ़ी वो लड़ाई चल रही थी। बाल गंगाधर तिलक did not want Gandhi to start that non-cooperation movement. Actually, like if you look at the dates, the day Bal Gangadhar Tilak died, the next day non-cooperation movement started. Now, one of the things that he said, there were 20 things. उन्होंने बाद में जब वो सॉल्ट सत्याग्रह भी जब उन्होंने किया, तो उससे पहले उन्होंने 20 पॉइंट रखे थे. Now go through those 20 points. One of the points is actually the right for Indians to carry arms. ये गांधी का एक पॉइंट था out of those 20 points. How could a person who was so much into hinsa and like ahimsa ask for arms for like people to carry? Like I don't know like what his like argument was, but what I'm saying is his understanding of hinsa and ahimsa was not correct in many ways, because like he took that as the natural लड़ाई जो हो रही है दोनों के बीच में, वो अगर होता सच होता तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल हिस्ट्री में, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल द सिख गुरुज, लाइक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 10 सिख गुरुज में छठे गुरु जो बिल्कुल द बीच वाले थे, उन्होंने ही पहली बार वो तलवार उठाई थी, क्योंकि वो जान गए थे कि हिंसा और अहिंसा और स्पिरिचुअलिटी में एक
कोई वैसा लिंक नहीं है अबाउट स्वॉर्ड एंड लाइक नॉट यू नो लाइक हैविंग अ स्वॉर्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्वॉर्ड लेके चलूंगा तो मैं हिंसक हो गया हूं. हिंसक तब होता हूं जब मैं जो हूं, जब उसके बीच में, और जो मैं आइडेंटिटी जो मैंने ले ली है कि मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूं तो मैं ऐसे ही चलूंगा, यू नो, तो एक वो कैरिकेचर बन गया है. तो उसके बीच की जो लड़ाई है, दैट इज हिंसा. एंड दैट इज व्हाई देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन फॉर एनी ऑफ द सिख गुरुज आफ्टर दैट. यू नो, वेदर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, क्या वो नहीं थे? वो स्पिरिचुअल, वो भी थे. बट व्हाई डिड दे कैरी दैट? सो हिंसा का जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई थिंक like is a little like wonky. सो ईगो, अगर कोई पूछे ईगो क्या है, कैसे शुरू हुआ, सो आई वुड अज्यूम दैट ईगो इज see, ego is important. Without ego, how will you survive? I mean, it's your survival instinct. You have to survive. You need that ego. You have to know that you are, you do exist. It's about your existence, and you have to realize, who am I? मैं Correct. कौन हूँ? मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी आई, उसके बाद मैं शॉर्टली बताऊंगा व्हाट आई थिंक इज ईगो. मुझे एकदम से याद आ गई कहानी, और प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरे को नाम याद नहीं है. एक्चुअली आई एम श्योर इट्स रिलेटेड टू सम, इट्स आई डोंट नो इफ इट इज़ अ फेबल और अ स्टोरी, बट मैंने सुनी थी बचपन में. माई फादर टोल्ड मी वंस, मुझे याद आ गई एकदम से वो, एंड लेट मी ट्राई टू रिकलेक्ट इट. तो इट गोज समथिंग लाइक दिस, दैट देयर वाज दिस, एक बंदा था जो कि गांव में घूमता रहता था, गाता रहता था. जो ये फ़कीर पागल लोग नहीं घूमते रहते हैं गांव में, एक आध आइटम हमेशा ऐसे होते हैं वो की. और मुगल्स यूज टू रूल अस, तब तक हमारे यहाँ मुस्लिम राज आ गया था इंडिया में. सो एंड ही हैड अ गुरु, वो मुस्लिम गुरु, यू नो, हु वाज पार्ट ऑफ द कोर्ट, यू नो, एट दैट टाइम. तो गुरु थे, उसको बताते रहते थे कि व्हाट इज़ नॉन वायलेंस, एंड what are Allah's teachings, and what it means to surrender your ego. You should never have ego, and blah 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 blah. And chela jo tha, he actually started understanding it and practicing it. And one day suddenly he got enlightened, and he started screaming, गली गली में जाके scream करने लगा कि अनल हक, तत्वमसी, तत्वमसी, अनल हक. लोगों ने, क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? तो उसने बोला, I am everything, I am whole. He said, I am God, I am that. He suddenly realized that. तो लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन किया. लोगों ने कहा, अगर ये पता चल गया लोकल नवाब को, राजा को, तो तुम्हारे तो टुकड़े करवा देंगे. कहता है, बट गो एंड टेल योर नवाब दैट ही इज ऑल्सो अनल हक. ही सेड, पागल हो गए हो, नवाब नहीं तो बोला है कि अनल हक जो है ओनली अल्लाह, आई एम होल इज अल्लाह. तो वो लोग बोलते हैं अनल हक है, बट एक्चुअली व्हाट दे मीन इज अल्लाह. तो उसको नवाब ने बुलवाया, और तो अपने जन बुलवाया, और उसने बोला कि तुमने ऐसा ऐसा किया. कहता है, पर मैं तो आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ. तो उसने बोला कि इसको जो है, एवरी पीस ऑफ हिज बॉडी शुड बी कट इन पब्लिक, एवरी सिंगल पीस शुड बी कट, ही शुड बी टॉर्चर्ड एंड किल्ड. सो ही वेंट टू हिज गुरु रात को. उसने कहा, ये क्या है? तो गुरु ने बोला, देखो, ये रियलाइजेशन तो अच्छी बात है, मुझे भी है, पर ये थोड़ी इसका मतलब जो रियलाइज कर लो जाके पब्लिक में बोल रहे हो, राइट? ये तो तुम्हारा ईगो है विच इज स्क्रीमिंग. एंड ही सेड, नो, आई हैव फाउंड फ्रीडम नाउ. तो अगले दिन जब उसको काट रहे थे, तो अब वो जो उसका जो गुरु था, जो उसका मास्टर जो था, ही वॉज अ सिटीजन ऑफ दैट सिटी और विलेज. तो उसको मजबूरी थी, सबके हाथ में पत्थर थे, ईंटें थी मारने के लिए. किसी को मारना तो सबको था. तो गुरु ने कहा, मैं अपने स्टूडेंट को तो पत्थर नहीं मार सकता हूँ. तो उसने कहीं से गुलाब का फूल ले आया, एंड ही सेड, आई विल हिट हिम विद इट. तो उसको लोग पत्थर मारते रहे, एंड देन ही केप्ट लाफिंग. तो लोगों ने कहा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? उसका नाम शायद अल मसूद था या कुछ ऐसा था. कहने लगा, तुम लोग सब जिसको मारना चाहिए उसको तो मार ही नहीं रहे हो. कहता, मुझे तो तुम मार ही नहीं रहे, तुम तो अल मसूद को मार रहे हो. तो यू गाइज नो नथिंग. यू आर किलिंग बिकॉज इट्स योर ईगो. यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग बिसाइड्स व्हाट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, एंड टू कीप दैट पोजिशन यू आर. तो फिर टीचर जो था, उसने अपना फूल, जब उसकी बारी है, उसने फूल मार दिया. एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग. तो किसी ने, अभी तक इतना हंस रहा था, एक फूल पड़ गया तो तू रोने लगा. तो उसने कहा, आई हैड एक्सपेक्टेड एवरीबडी एल्स to believe in violence because of the king's ego, but not you.
कहता है बट मैंने तो तुम्हें फूल ही मारा, फूल थोड़ी लगता है, आई कैन नेवर हर्ट यू, आई एम योर टीचर. कहता है नो, it was the violence in your mind which is hurting me, not your flower. You know, and then he died. So मुझे इसलिए ये story याद आ गई because it very beautifully says that when you understand that you are part of that, जो हमारी philosophy है. भाई अनलहक तो हमसे बहुत सालों बाद आया ना, ये तो अभी 1400 साल 800-900 साल पुराना नारा है अनलहक. हमारा तो कब से चला आ रहा है, या 1400 साल पुराना होगा. हमारा तो तत्वमसी तो हमारा पहला श्लोक है, हमारा तो पहला रिटन वर्ड है हमारा. सो आई थिंक दिस ईगो जो चीज है ना, मैं जानता हूं, मुझे पता है, माई पर्सपेक्टिव इज द ओनली राइट पर्सपेक्टिव. वाई पीपल से पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर बैड? Why people say spirituality is not bad? Because in spirituality there is no conflict. वो आपस में स्वामियों वामियों का होता रहेगा. और ये साधु संत स्वामी महाराज योगी, इनके मैंने बहुत देखा, इनसे बड़े ईगो दुनिया में किसी के होते नहीं हैं. मैं तो शास्त्रार्थों में भी गया हूँ और बड़े बड़े आई यूज देम फॉर गुड फिलोसफी एंड टीचिंग्स एंड गुड कोटेबल लाइन्स. अदरवाइज ये लोग रियल लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग ऑल, but most of these famous moneyed gurus with ashrams and all, they have the biggest of the egos in the world. I mean, that's why I just somehow cannot surrender to these people, because उनके आचरण और thinking में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है. So I think the surrender of ego comes when you realize there is no difference between these trees and the world and me. लेकिन ego शुरू होता है the moment somebody says we are an intelligent race on this earth. When we say superior and inferior species, we think humans, the primary problem is that humans believe they are a superior species. और आज क्या हुआ, आज रियलिटी में क्या हुआ, जितने वायरस हैं वर्ल्ड के, टोटल वायरस ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू कलेक्ट देम, देयर टोटल वेट इज लेस देन 1 ग्राम. उसमें भी मिली ग्राम का एक वायरस है विच इज कॉल्ड कोरोना वायरस. इट हैज मेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स सिट एट होम एंड पीपल आर डाइंग, यंग पीपल आर डाइंग नाउ, चिल्ड्रन आर गोना बी अटैक्ड. वेयर इज, तो ये जो हमारा ईगो था, वी कैन डू एनीथिंग. एंड सो मैं ईगो को, सिंस वी आर ऑलरेडी 30 minutes, यू स्पीक एंड देन वील कंक्लूड. आई वुड से in my mind ego operates at 2-3 different levels. Individual ego I don't have so much of problems with, because it's impossible to change it. It takes place in family, workplace, people know how to deal with it, you know, and that's where the whole theory of oppression comes. But that oppression is a wrong thing, it's a ego power play. Then the second kind of ego is, which is I would call fragmented ego societies. Means different societies, Brahmins will say हम अच्छे हैं, हम superior हैं, white race will say हम superior हैं, now blacks are asserting themselves. तो it depends in which part of the world. और वो एक ऐसी लड़ाई है कि आप अगर ये 5-10 साल और चल गया ना, ये कोरोना का प्रॉब्लम और मास्किंग का, ट्रस्ट मी पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग बिटवीन मास्क की. ये ऐसे मास्क पहनने, N95 या N92 पहनने वाले जो हैं वो बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं. somebody will say I am superior, you are inferior, will start judging people like that. लॉट ऑफ पीपल से कि भाई अच्छा ये कलर का जो है डिस्क्रिमिनेशन ये खत्म हो जाना चाहिए. कुछ नहीं होगा, वी विल अचीव नथिंग. पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग, टॉल पीपल एंड शॉर्ट पीपल, फैट पीपल एंड थिन पीपल. पीपल विल फाइट बिकॉज ईगो में ब्लैक एंड वाइट का कुछ लेना देना ही नहीं है. क्या क्या लड़ोगे तुम? नाउ यू विल से कि सो व्हाट ऑल विल यू फाइट? यू विल फाइट ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो पीपल विल कीप फाइटिंग. पर ये भी लोगों को डील करना आता है. अगर इसमें पॉलिटिशियंस और रिलीजियस गुरुज ना गुरें तो ब्लैक एंड वाइट और क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र आपस में रह सकते हैं. दे विल डेफिनेटली फाइंड अ वे, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, लीगल प्रोसेसेस इन प्लेस. बट देयर इज वन ईगो which is the worst ego and which has destroyed Mother Nature, which has screwed everybody together. Today, if the coronavirus attack is there, it's because of that. Because of our ego, we never ever invested in the things which actually matter. We kept investing in things which actually do not matter, and that is the human ego. Ego of humanity. This is also an ego to pinpoint, तुम में ego है, तुम में ego. No, humanity collectively has glorified ego so much by saying this is superior, that is inferior. Once we got into that mode, since then this bus has never stopped. It's going on and on like on some kind of a eternal battery.
So this is why what I think is a very dangerous part of ego. What do you think? Your final concluding comments. ठीक है. तो सी मैं लाइक वाइल यू वर स्पीकिंग ना, मैं सोच रहा था, एंड आई थिंक लाइक वन ऑफ द थिंग्स लाइक वी वर सेइंग कि वो आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड है, कि मैंने ये आइडेंटिटी ले ली, लाइक यू आर सेइंग कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सबसे बड़ी रेस हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सी द थिंग इज के देयर इज नो सच थिंग एज human being is always like this. Every human being is different. Every moment he is different, she is different, like whatever it is. So there is no like one definition of a human being. There is no one definition of a Brahmin. There is no one definition of a Kshatriya or Shudra or black or white. Everyone is different. But होता क्या है, हम उस आइडेंटिटी के साथ कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ देते हैं और वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि सारे वाइट्स ऐसे हैं, सारे ब्लैक्स भी ऐसे हैं, सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं. तो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है. एंड सो लाइक इफ यू रियली लुक एट द होल like paradigm, like you'll see that from going with the identity which is not really you in the core sense to having like attachment to that identity, and since you don't know, because there is no such thing as one universal truth about that identity, you assign characteristics and therefore you assign beliefs. That is why all the belief systems have come in place. हमने आइडेंटिटी बना दी कि हम तो ऐसे हैं और हम ये बिलीव करते हैं, हमारा सन ऑफ गॉड हमारा वो है, या हमारा ये फलाना वो मैसेंजर है, या ये ऐसा है, वो ऐसे ही है. मतलब देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. लाइक गांधी के बारे में भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. So there is no like one truth about Gandhi. There is no one truth about me. There is no one truth about you. Every moment we are different. You ask about my friends about me, my wife about me, my kids about me. So I'm a different person to everyone. You ask me about myself, I'm a different person. So कोई ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट हम बना देते हैं उसको. वो हमारा बिलीफ सिस्टम है. सो आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस होल वर्ल्ड हैज बीन कि हम बिलीफ्स में रहते हैं क्योंकि हम आइडेंटिटीज के साथ लिंक्ड है. अगर हम कोर के साथ लिंक्ड होते तो हम शायद बिलीफ भी ना रखते. वी वुड बी मोर सीकर्स लाइक इट वॉज इन इंडिया वर्सेस द बिलीफ सिस्टम ऑफ आउटसाइड. सो उनका जो पूरा सिस्टम ही आइडेंटिटी के साथ लिंक था, इसलिए वो बिलीफ सिस्टम बने. हमारे यहाँ आइडेंटिटी के साथ लिंक नहीं था, जानबूझ के नहीं रखते थे, होता था पर रखते नहीं थे. तभी हमारे यहाँ सीकिंग चली कि मैं जो हूँ, वो जो मैं समझता हूँ, मेरे आइडियाज, मेरी पर्सनालिटी, मेरे थॉट्स, वो दैट इज नॉट व्हाट डिफाइंस मी एज इन द कोर पर्सन. द कोर बीइंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट. सो आई हैव टू सर्च फॉर दैट. दैट सर्च negated or at least went beyond my identities. So that is why हमारी सीकिंग होती थी, बिलीफ नहीं होता था. तो so I think ये दो पैराडाइम्स हैं like which are very very different. So that is how I look at it. Okay, wonderful. आज किस फॉर्म में हो भाई? आज आपने ऑरेंज शर्ट पहनी है तो आप भगवा मूड में चल रहे अंदर से आपके फूट रहा है क्या? अच्छा सर, very nice. नहीं, चलो, on this note we'll go. So okay, so before I conclude, you heard us, but from life I have learned, and let me give a disclaimer, I have ego, so I have not been able to I have not gotten rid of it. But मैं बताता हूँ मैं किस स्टेज में हूँ. Okay, when I had no idea about ego, the world was all wonderful and everything was fine, and I said this is the reality. मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता रहता हूँ. Right now I am understanding ego. I am understanding ego very closely. Not just my ego, but the ego, collective ego of the world and everything. And therefore, I know that there is an ego. I have this awareness that there is an ego. But if somebody asks me how to get rid of it, I would say I don't know. Right? I realize that the need to answer something, need to show that I know, human need to believe that I know, creates bigger ego and creates maximum problem. Everybody wants to tell you I know.
Okay, I also do that. It's not that I go to these debates and people ask questions and I have to answer every question. And how it appeared to me, I've seen the performance of all the politicians. Ask them any question, they have to answer. Religious gurus, have you ever heard any religious guru ever saying, or spiritual guru ever saying, I don't know? They never ever say that. Never ever say that. Rajneesh was the greatest person. He spoke so much about I don't know. But he never said I don't know. You know what they try to tell you is you don't know, therefore you should say I don't know. But they never say I don't know. And which they don't know. Actually. And why they don't say this? Ab Galileo ko dekhiye, when Galileo said that earth actually goes around the sun and it's not flat, they said no, you cannot say this, because if you say this, then people will think if this part of what Jesus said in Bible, what is written is wrong, they'll start doubting everything. To protect that doubt, instead of saying yes, we didn't know and you know, they killed him. Right. Socrates, almost 2000 years ago, right? He said democracy is a failed idea. I did a long show in Brutally Honest on my channel. आपने ही लिखा था उसके बारे में. Actually, I got inspired from there. आपने लिखा तो मैंने कहा चलो इस पे शो करते हैं. So Socrates said that democracy is a failed idea because ultimately it will become a mobocracy, it will become populist, and then you cannot hold so many diverse groups, and it will cater only to the debauch, drunkards, and youngsters. And this is exactly what's happening in the entire world. Youngsters are cancelling people becoming wokes. On the other hand, you are just destroying all the alignments of the world, and that's exactly what happened. You know, so that's what I think. I don't know. It's my belief. Hey Raju, एक second, ये कोई somebody आ गया. क्या है यार? तो नजर आई वहाँ से. So what people want to believe is that they know, and this is my belief. See, yes, we are all Sanatani people. We know big philosophy. We are Hindus. We also fight for that. To live in a real world, you have to do that. But I think to accept that, yes, this is my performance for the world, but actually this is not what I know. Okay. Somebody saying, yes, I'm fighting for Allah, but if that person understands that actually these are not Allah's words, and even if they are, I don't know what I'm doing is right or wrong, and then if he goes and explodes himself saying Allah Akbar, I'll have more respect for that man. But for the world to believe that what I believe is the right belief and go around and kill people because of that, I think that is the biggest destruction of our ego, and starts at micro level with me. So I am at a stage where I've started accepting and learning that yes, I don't know. I have a feeling when you understand what is ego, then you become like that fakir. क्या नाम था उसका? Masood was his name, yeah, right? Mansoor. हाँ, कुछ नाम था ना जिसको they cut into pieces. Yeah. था ना, कुछ story थी एक ऐसी. Mansoor. Al Mansoor something, and his guru was called Junaid or something. Right. और मंसूर के बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे. उसकी तो स्टोरी है. सो मंसूर हैड नो ईगो. मंसूर वाज हर्ट when his teacher threw this thing, because he thought that he have understood the world, but he did not understand the human nature. He expected that his teacher will never, who professes violence, will never ever hurt anybody. And when he threw a flower, his entire thing broke. That was the time he surrendered his ego and he started laughing. And he said, "You are hitting the wrong person. Sorry, you are hitting that ego guy. You are not hitting me." So he kept his ego out. His ego was cut into many pieces. But today we are talking about Al Masood, whatever his name was. We are talking about him. So anyway, this was really fun talking to you. Friends, this is our 10th episode. We decided to do, since आजकल वेब सीरीज़ में जब मैं बड़ा था तो 13 एपिसोड का कॉन्सेप्ट चलता था. In web series there is a 10 episode concept. We have delivered 10 concepts and 10 different ideas to you, 10 episodes. We are going to take a short break. After this,
We'll come back soon, maybe in a new format. I don't know if the lockdown will be there or not. We can shoot it better, we can do different things, but definitely we'll come back to you and we'll discuss more and more concepts. We'll make it more interactive. We are also planning to come on Clubhouse and host these rooms on various metaphysical questions. So you are most welcome. But please understand that Desh is doing it out of his pocket. I am working out of my pocket. All of us are doing it, stretching our resources in whichever way. And Desh also writes a newsletter called Drishtikon. You must subscribe to it even if you don't financially contribute. You can go down, you can see I Am Buddha Foundation's links, and you can also see links of Drishtikon. I'll really appreciate, we'll be really full of gratitude if you can help us in whichever way you want, be it financial contribution or be it your blessings. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you are. Stay safe and fight Corona in whichever way you can. Thank you. Namaskar.